veteran thinker Dhiman P.R. Ambedkar ji, my darling friend Mangesh Daivale, conference chair Professor Dr. Ramteke sir, my beloved friend Sanjay Ghade, session chair Dr. Alka Doke madam, and all the futurists who are present here. अगले 15 सालों में we are going to witness different kind of humanities. We are going to witness different kind of society. We are going to witness different kind of individuals. ये छोटी गुड़िया बैठी है यहाँ, क्या नाम है बेटा आपका? आयुषी। हाँ, तो 15 साल के बाद जो है आयुषी का जीवन जो है जितना इंसान पिछले 3000 सालों में नहीं बदला है उतना 15 साल में बदलने वाला है. You know that humanity has not been changed to the extent since last 3000 years. They are going to change dramatically after 15 years. So how Ayushi's life, being an individual and society as a whole, is going to change, that I am going to deliver in next 15 minutes of time which is allotted to me. So at the outset I must thank Professor Dr. Ramteke sir, Dr. Ghade, Mangesh bhai, Sandeep bhai, and all the elite intellectual, rather I would not say intellectual, because early in the morning we will discuss that do intellectuals shape this world. So there is a famous writer called Gerard Diamond who wrote a book called Guns, Germs and Steel, and he studied the history of human evolution, and he made the statement that nobody on this planet are intellectual, they are at par. So I'll not elaborate what he has been talked about throughout his book, which is Pulitzer Prize winning book. Read it, you'll get you'll confront the answer that nobody is intellectual, everybody is at par. So that is not the point of discussions today. So I am going to deliberate on what kind of changes that we individuals and society as a whole going to face in next 15 years because of artificial intelligence. So there is a term called singularity. Now this is a buzzword which is popularized by Ray Kurzweil in his book Singularity is Nearer. 2005 में ये बुक आया था. लेकिन सिंगुलैरिटी की डेफिनेशन न्यूमैन ने 1958 में की थी. In 1958 Newman actually talked about the word singularity. So it's a process. Singularity is a state, is a process. 2040 के बाद
it will become impossible for all of us to withdraw technology from our day-to-day diurnal life. It will become impossible for all of us to separate us from the use of technology. So technology, or say human intelligence, will merge with the artificial intelligence up to 2040. You might have been heard about, आप लोगों ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जब हम बात करते हैं तो मैं हमेशा बात करता हूं कि देयर इज अ टर्म कॉल्ड डेस्कटॉप फैक्ट्री. अभी मैंने किसी से मुलाकात की, शी वॉज वर्किंग विथ फिनटेक कंपनी एंड शी वॉज वर्किंग फ्रॉम होम, सम स्टार्टअप कंपनी शी वॉज वर्किंग विथ. सो because of emergence of artificial intelligence, the concept like a desktop company will emerge in next couple of years. Desktop factory means what? और ये जैसे मंगेश भाई ने कहा कि this place, this Nagpur is a place, it has got potential to shape the future world, and it has got potential to shape the future world by the Ambedkarite people. This is possible. इसके बारे में हम सोचते नहीं हैं. ऐसा कहते हैं कि ये दुनिया जो है 780 करोड़ पॉपुलेशन है दुनिया की. हां 780 करोड़ आहे. काय नाव म्हटलं तुझं? हां आरुषी. किती करोड पॉप्युलेशन आहे बेटा? 780 करोड जगाची पॉप्युलेशन आहे, बरोबर. तर ह्या जगाच्या पॉप्युलेशनला, ह्या जगाला किती लोक चालवतात? फक्त 7,000 लोक चालवतात. Only 7,000 people drive this entire world. अब आप बोलेंगे कि मैं क्या, प्रोफेसर डोंगरे इज व्हाट मेकिंग फुल स्टेटमेंट. अब आप मुझे बताइए, आपके शरीर के अलावा, इमेजिन योर बॉडी ओनली, व्हाट बिलोंग्स टू यू. आपके शरीर के अलावा, bearing your body, what belongs to you? Does speck belongs to you? No. This mic belongs to you? No. This tap belongs to you? No. This Bisleri water belongs to you? No. The certificate that you will receive belongs to you? No. The tie you wear belongs to you? No. So then only body belongs to you. It means that from early in the morning you woke up and late night when you go to the bed, it will drive by the others. और वो 7,000 लोग ही चलाते हैं. जिसमें चलाते हैं उसमें जैसे हम मान के चलते हैं कि जिसमें मार्क जुकरबर्ग है, जिसमें टॉम अल्टमन है, जिसमें डॉक्टर बी आर अम्बेडकर है. अभी भी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर इज अलाइव. डॉक्टर बी आर अम्बेडकर इज नॉट डेड. So he is driving me, he is driving you, and considering this line of, thinking, this Nagpur and the people, Ambedkarite people of Nagpur have potential to drive the world in next couple of years if they plan it properly.
So I was talking about desktop factory, how artificial intelligence, going to change your life. So there comes the concept called desktop factory. Now in days to come, for example, साहब जो है, रामटेके साहब जो है, he want to perform very critical, operation. जैसे अमिल मेरा वो बड़ा इंटरेस्टिंग, मुझे जो अच्छा पार्ट लगता है वो amygdala is my the favorite part of the brain. So how to, if he want to perform a very critical, very critical operation, and in next 15 years nanobots coupled with the artificial intelligence, that will came into existence, nanobots, and they will perform the operations, nanobots. मतलब मुझे याद पड़ता है कि 26-27 साल पहले एक किताब पढ़ी थी, 2080 नाम, मराठीमध्ये होती ती पुस्तक, 2080. तर त्या पुस्तकाची कल्पना अशी होती की एक ब्रेनमध्ये ट्यूमर आलेला आहे आणि त्या ट्यूमरच्या ऑपरेशन्स करायचे आहे. सो 2080 मध्ये डॉक्टर्स कॅन बी कन्वर्टेड इंटू मॉलिक्युल्स. म्हणजे बघा कन्सेप्शन्स कसं होतं, अँड दॅट इज हॅपनिंग की द डॉक्टर्स, टीम ऑफ द डॉक्टर्स विल बी कन्वर्टेड इंटू मॉलिक्युल्स. आता बघा की डी ब्रॉगली 1924ला डी ब्रॉगलीने एक थिअरम म्हणजे पॉस्च्युलेट केला. आय डोंट नो हाऊ मेनी ऑफ यू अवेअर अबाउट इट, मलाही त्याच्याबद्दल जास्त माहीत नाही आहे. पण डी ब्रॉगलीने एक एक्सपेरिमेंट केलं 1924ला आणि 1930ला त्याला नोबल प्राइज मिळालं. त्यांचं म्हणणं होतं, म्हणजे इट इज पॉस्च्युलेट दॅट if light is made up of all the tiny particles, then all the particles is made up of light. म्हणजे बुद्धाला म्हणजे मंगेश भाई knows this की this wall is not solid. हे वॉल जे आहे ते सॉलिड नाही किंवा हे टेबल हे सॉलिड नाही, हे वेव्ह फॉर्म्समध्ये आहेत. म्हणजे यू कॅन सी if you cultivate your mind through meditation, then you can see what is lies behind this wall. तर डी ब्रॉगलीने ते हा पॉस्च्युलेट केलं की if light is made up of small tiny particles, then all the particles is made up of light. त्यावर्षी त्यांना नोबल प्राइज मिळालं नाही. मग क्रेमरनी त्याला प्रूव्ह केलेलं 1930 मध्ये, आणि ही गॉट नोबल प्राइज. सो बेस्ड ऑन दिस पर्टिक्युलर पॉस्च्युलेशन ऑर एक्सपेरिमेंट 2080 मध्ये 8 डॉक्टर्सच्या टीमला मॉलिक्युल्समध्ये कन्वर्ट केलं, अँड दे हॅज बीन इंजेक्टेड. आता मॉलिक्युल्स, माणसाला जेव्हा तुम्ही मॉलिक्युल्समध्ये कन्वर्ट करता, दो दिस सीम्स टू बी फिक्शन्स, but these are going to be reality in days to come, because nanobots now are able to perform the, it is happening in the, I don't know, sir is knowing very well whether it is happening in Nagpur or not, but in other parts of the world which we call developed one, the operations is happening through nanobots. Okay, that nanobots injected through your blood vessels, and it is guided through artificial intelligence. It goes to your brain. They cut
the infected part of your brain, and they collected it, and again it has been removed out from your body. So in desktop factory concept, probably Dr. Sanjay Ramteke sir will perform the operation by the team who are sitting at some research institute in Europe or America, and people of Nagpur will enjoy that benefit. So this is a kind of desktop factory concept which is going to emerge in next couple of 15 years. Then as far as AI is concerned, 3D printings. Now 3D printings is emerging, whereby artificial hearts, whereby artificial liver, even the different parts of different organs of our body is possible to print through through 3D printing technology. So there are so many, for example cybernetics, for example hydroponics. अभी those who are meat lover, मतलब जो चिकन खाते हैं, गोट का मीट खाते हैं, they don't require to kill the animals. They don't, because of development in biotechnology, now meat is started to be produced or cultivated at the lab. लॅब मध्ये आता तेवढ्याच टेस्टच्या लॅब मध्ये आता तुम्हाला व्हील मीट म्हणतात त्याला, व्हील मीट विच इज मोर हाइजेनिक देन दैट ऑफ द मीट यू परचेस फ्रॉम द बूचर. तो मेरी ये विनंती है आप सब नागपुर वाले लोगों को कि आपके पास रिसोर्सेस है. सारे दुनिया के अंदर जितने भी अम्बेडकराइट है, द अम्बेडकराइट ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड. मैंने ऐसा सुना है कि अमेरिका में ऐसे अम्बेडकराइट है कि जिनके पास हेलीकॉप्टर, उनके खुद के चार्टर प्लेन भी है, ऐसे भी अम्बेडकराइट है. लेकिन सारे दुनिया के अंदर नागपुर में जो अम्बेडकराइट लोगों के पास जो पावर है, वो पावर दुनिया के अंदर कहीं नहीं है. उसको बनिया कैसा सोचता है, बनिया डॉक्टर नहीं है लेकिन उसके हॉस्पिटल्स है ना, पढ़ा नहीं है लेकिन उसकी शिक्षण संस्थाएं हैं. हमारे पास सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे लोग हैं लेकिन हमारे पास शिक्षण संस्थाएं नहीं है. हम जो है बुद्धा के फॉलोअर्स नहीं है, बेसिकली रियल फॉलोअर्स. Ambedkarite of Nagpur, including myself, is not real follower of Buddha because we fail to unite ourselves. We fail to create the cooperation amongst ourselves. और वो कोऑपरेशंस अगर डॉक्टर लोगों ने कोऑपरेशंस लाया तो हमारे कितने डॉक्टर्स जो है वो केयर में काम करते हैं, बहुत ज़्यादा बहुत होशियार हैं, केयर में काम करते, क्रिम्स में काम करते. क्रिम्स इज बिलोंग्स टू हुम या केयर इज बिलोंग्स टू हुम? तो वाई शुड नॉट वी हैव सच अ चेन ऑफ इंस्टीट्यूशंस, दैट इंस्टीट्यूशंस pertaining to healthcare, pertaining to education, pertaining to मैन्युफैक्चरिंग. अभी देखो 3D प्रिंटिंग्स में मैंने बात किया कि सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयज़ हमारे रिटेल्स में है, कष्टकरी है. अभी देखिएगा कि और मैं 5 मिनट लेता हूँ कि 2024 में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की एक रिपोर्ट पब्लिश हुई.
द फ्यूचर ऑफ जॉब नाम की एक रिपोर्ट पब्लिश हुई, और ये रिपोर्ट ये कहती है कि नेक्स्ट 10 साल में द जॉब विच इज इन एग्जिस्टेंट टुडे, द जॉब which are existent in today, 75% of that job will be no more in next 10 years. There is no requirement of professors like me or lecturer like faculties like us. There is no requirement of the doctors even in days to come, ऐसा कहते हैं, मेक मी करेक्ट इफ आई एम रॉन्ग, कि अम्बिलिकल हर्निया जो होता है, महिलाओं को जो अम्बिलिकल हर्निया होता है, ये अम्बिलिकल हर्निया जो है बिकॉज ऑफ एरर्स इन दैट कट्स, 70% वो जो नॉर्मल डिलीवरी नहीं होती उसको क्या, हाँ सीजर 70% जो सीजर्स होते हैं, जितने सीजर्स होते हैं उसके 70% जो महिला होते हैं उनको अम्बिलिकल हर्निया होता है, ऐसा कहते हैं. आई मे बी रॉन्ग बट आई रीड समवेयर एल्स, and it occurs because of the error in cutting, human error in cut. अभी ऐसा है कि robots now make the precise cutting. Days to come that for scissor the robots are now robots are using to make the cut for a scissor. So why should not we think of to have to embrace such kind of technology? We require to be at forefront, and we have that Ambedkarite peoples of Nagpur have that ability to adopt this kind of technology. So at the concluding of that, artificial intelligence, though it is going to change our life drastically, but it requires, it brings so many perils for us. For example, next 15 years we will face the problem of psychological disorientation, anxiety, loss of purpose, then individual feel absolute. मतलब अभी जो 5 साल के हैं और 15 साल के बाद जो 20 साल के होंगे, so they will face the severe problems of psychological disorientation, because the self-control required, which will be lost by that particular generation because of artificial intelligence. क्योंकि उनको डावीकडचा उजवा गोल आणि उजवीकडचा कोणता गोल जो काही असेल, म्हणजे भावनाओं को समझिए आप, तो ये चीज जो है ये खत्म होने वाली है, और ये खत्म होने वाली है तो उसका सेल्फ थिंकिंग जो है वो खत्म होने वाली है. साइकोलॉजिकल डिसओरिएंटेशंस विल बी द प्रॉब्लम्स इन डेज टू कम. सो then existential crisis that we are going to face, where AI blur our human identity, then social fragmentations or social cohesion is going to be distract in next 15 years, and for this we required compassion, for this we required metta, for this we required karuna, for this we required Buddha. Thank you very much.